Good morning, everybody. Today, in accounting part, we are going to describe the chapter called as an introduction to partnership accounts. An introduction to partnership account. Now see, whenever we describe about partnership, जब भी हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन करते हैं, all of us know it very clearly. आपने आपके अर्लियर लेवल ऑफ एजुकेशन में स्टडी किया है that partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or anyone on behalf of all. That was the meaning of partnership, where it clearly indicates, उसमें से हमको पता चल सकता है that partnership is agreement. Partnership is agreement. It indicates that it will involve minimum two people. देखो, जब एग्रीमेंट की बात होती है तो कम से कम दो लोग तो होने चाहिए. And even this is very clearly specified under the Partnership Act of 1932. See, the partnership business in India is regulated by Indian Partnership Act 1932. उसमें बहुत clearly बताया under the provision of section 5 of the Partnership Act 32. It's clearly said that there must be an agreement between two or more persons. Agreement होना compulsory है, but the law is not very clear. The law is not very clear that the agreement may be written or agreement may be oral. Agreement होना चाहिए, ये important है. It can be written agreement, it can be oral agreement. Partnership Act ऐसा नहीं बोलता है कि जो partners हैं उनके बीच में written agreement होना चाहिए. It's not specified under the law. But law में इतना जरूर बोला है कि agreement होना चाहिए. There must be agreement between two or more persons. There must be minimum two people to start the partnership business. इसमें से दूसरा important point हम लोग लेते हैं, partners will undertake business. Business करेंगे तो profit होगा, and profit होगा तो वो लोग आपस में शेयर करेंगे. Now here, under the provisions of the Partnership Act 1932, Section 2, subsection B, 2B of the Partnership Act states that the business which will be conducted by the partners, can include any business, any trade, any occupation, any profession. मतलब आप प्रोफेशनल एक्टिविटी भी पार्टनरशिप में कर सकते हो. मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो दो लोग मिलके आपका सीए का ऑफिस भी पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हो. प्रोफेशन कैन आल्सो बी इन पार्टनरशिप.
very clearly said in the Partnership Act. There, but खाली concept इतना है, the law very clearly says that the business what partners do among each other shall be legal. It should be legal. तीसरा important point, partners have agreed to share the profit. Sharing of profit is very important part of the partnership business. Here, this is covered under Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. यहाँ पे क्या बोला गया है? Sharing of profit is very clearly specified into the law. आगे ऐसे कैसे बताया जा रहा है कि लॉस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड. मतलब क्या है कि 1932 का लॉ जो है उसमें क्लियरली ऐसे बताया नहीं है दैट दे शुड शेयर द लॉसेस आल्सो. व्हाट डज दैट इम्प्लाई? शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट नेसेसरी. मतलब पार्टनर्स ने एग्री किया, ए बी एंड सी पार्टनर है, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड दे एग्रीड दैट सी विल नॉट शेयर लॉस, तो चल सकता है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है दैट सी शुड always share the loss. They can agree. Sharing of loss is not mandatory, but implied है. Usually आप और मैं भी जब बिजनेस करेंगे, मैं बोलूंगा मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा, तो तुम बोलोगे राम राम, बाय बाय, आवजो. Nobody will take any person as a partner only to share profits. Usually ये एक स्पेशल वैरायटी ऑफ पार्टनर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है टू शेयर द प्रॉफिट्स. And most important part is mutual agency. देखो मीनिंग के अंदर ही मैंने बताया, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट to share profits of the business carried on by all or anyone on behalf of all. The simple meaning क्या होता है? You know that every partner is an agent of the firm and an agent of other partners. So A, B, and C. A can act as agent of B also, can act as agent of C also, and can act agent of ABC and company also. So it's a mutual agency. मतलब क्या हो जाएगा कि every person's act, every partner's act can bind the other partners as well as the firm towards his activity. So यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऐसे तो पार्टनरशिप के भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है is unlimited liability. What do we mean by unlimited liability? Can anybody of you help me to know what do we mean by unlimited liability? Bhavika, your answer is wrong. Unlimited liability मतलब क्या? तो in the cases where business debts are more than
The personal assets of the partners can also be attached to settle the debts of the business. तो ये जो ड्रॉबैक था इसके वजह से many people, many businesses were not interested, many persons were not interested to come up with partnership business. And therefore, in recent time, around 2008, around 2008, a new form of business was introduced called as LLP. We popularly know it as LLP. That is Limited Liability Partnership. पार्टनरशिप बिजनेस के सबसे बड़े ड्रॉबैक को इसने ओवरकम कर दिया. यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, as the name itself says, the liability of the partner will be limited. कहाँ तक लिमिटेड रहेगा? तो टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन. मतलब अभी पार्टनर ने बोला था हम लोग सब पार्टनरशिप के लिए 1 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे. अभी ए ने 50,000 दिया, बी ने 50,000 दिया, सी ने पूरा 1 लाख दे दिया. तो इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ए का मैक्सिमम लायबिलिटी कितना रहेगा? ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 30,000. तो उसका मैक्सिमम लायबिलिटी कितना रहेगा? 1 लाख है, उसमें से 30 उसने पे किया, तो अभी उसका लायबिलिटी है 70,000. बी ने 50 पे किया, तो 50 इज अनपेड, दैट इज हिज मैक्सिमम लायबिलिटी. सी ने पूरा 1 लाख दे दिया था, तो ही विल नॉट हैव एनी फर्दर लायबिलिटी. आर यू गेटिंग दैट? दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी. अभी रिमेंबर, जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहेगा तो इसका एक सेपरेट एग्रीमेंट बनता है और उसके ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 एप्लीकेबल रहेगा. आप बोलोगे नहीं ये पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप है तो इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1942 चलेगा. Then it is wrong. जो पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं अप्लाइड होगा, उसके ऊपर अप्लाई होगा कौन सा एक्ट? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008. पार्टनरशिप एक्ट 32 के कोई भी रूल उनके ऊपर अप्लाइड नहीं होगी. तो एलएलपी और अपने नॉर्मल पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है? तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस है उनके ऊपर जो लॉ अप्लाइड होता है वो डिफरेंट है. पहला तो आप बताओ मुझको, पार्टनरशिप एक्ट में कौन सा लॉ अप्लाइड होता है? पार्टनरशिप बिजनेस में कौन सा लॉ अप्लाई होता है? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान.
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी पे कौन सा लॉ अप्लाइड रहेगा? एलएलपी पे कौन सा लॉ अप्लाइड रहेगा? एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट 2008। रिमेंबर, सी, आपने ओसीएम के अंदर पढ़ा था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ऑप्शनल है। Registration of partnership is optional under the Partnership Act 1932. But can I say it is compulsory in Maharashtra? पढ़ा था और सीएम में। But registration of LLP is compulsory. LLP is compulsorily registered. It cannot be an unregistered entity. LLP will always be registered. तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा तो किधर रजिस्ट्रेशन होता है इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। LLP shall always be registered with registrar of companies. Then जब हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, तो आप लोगों ने 12th OCA में कंसेप्ट पढ़ा था कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपने एक उसका फीचर पढ़ा था, बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड। आपने उसका एक फीचर पढ़ा था, कुछ याद है आपको? क्या क्या फीचर था वो? एज इट इज रजिस्टर्ड, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर था। नो, नो, आपने फीचर पढ़ा। यस, वेरी गुड हितेन, वेरी गुड। सेपरेट लीगल स्टेटस या सेपरेट लीगल एंटिटी। Now, as it is created by the law, LLP, LLP is registered, always registered, I said. So LLP has a separate legal existence. It has a separate legal existence, but the general partnership will have no separate existence. Anything which is registered, which has separate existence, will have perpetual succession. Will have perpetual succession. That means it will have long life. So LLP has perpetual succession. It will have long life. Whereas the general partnership has short life. It will get affected with death, insanity, and insolvency of a partner. LLP will not. We all know that the minimum number of partners which we require to form a partnership is 2.
and maximum is 50 for general business. And for banking business, how much? Very good. For banking business, 20. Very good. I appreciate. याद रखते हैं आप लोग. Whereas in LLP, I can say minimum number of partners required are 2 and maximum there is no limit. No limit. और सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों का डिफरेंस है अबाउट लायबिलिटी. ऐसा इसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा रहेगा? व्हाट वुड बी द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर? अनलिमिटेड. मतलब पर्सनल असेट्स कैन बी अटैच्ड फॉर बिजनेस डेट्स. Whereas LLP के अंदर लायबिलिटी रहेगा लिमिटेड. नेम itself says limited liability partnership. ओके. अभी हम यहाँ पे LLP डिस्कस नहीं करेंगे, बट मॉडर्न डेज में LLP भी जनरेट हो गया है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है. Now we all know partnership comes on account of agreement. This agreement can be of two types. The agreement can be oral agreement and the agreement can be a written agreement. लॉ ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया है, मैंने पहले भी बताया आपको इधर, that it is an agreement between minimum two people and under the provisions of section 5 of the Partnership Act 1932. There is no specification that the agreement must only be written. It can be oral, it can be written. But what is always advisable? What is always advisable and why? Why? Instead of oral agreement, it is always advisable that there must be a written agreement so that it can act as a proof in future if in case of arising of any disputes among the partners. It can act as a proof. Oral agreement किया in future the partnership. नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं बोला था, तुमने ऐसा बताया था, मैंने तो ना बोला था. That can create more disputes. It can widen the disputes among the partners. So written agreement is always advisable, and that agreement is called as deed, partnership deed. तो पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत सारे अलग अलग इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे बिजनेस से रिलेटेड. जैसे बिजनेस का नाम क्या रहेगा, बिजनेस किधर रहेगा, बिजनेस क्या रहेगा, बिजनेस कब स्टार्ट होगा, बिजनेस कैसे किया जाएगा, हु विल बी द एक्टिव पार्टनर, हु विल बी द पैसिव पार्टनर, अगर है ऐसा तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, फिर पार्टनर्स के राइट्स क्या रहेंगे, ड्यूटीज क्या रहेंगे, सब उधर स्पेसिफाइड रहेगा. दैट इज कॉल्ड डीड. दैट इज एन एग्रीमेंट अमंग a written agreement among the partners. मैंने क्या बताया, डीड होना एडवाइजेबल है, बट कंपल्सरी नहीं. पार्टनरशिप डीड होना एडवाइजेबल है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी. तो डियर फ्रेंड्स,
जब हम बात कर रहे हैं ओरल एग्रीमेंट, जब अगर कोई डीड बनाया ही नहीं है पार्टनर्स ने आपस में, so there are 5 important points which shall always be applicable. So in your book, note these 5 points. मतलब in absence of any specific provisions of the deed, हम लोग पार्टनरशिप एक्ट ने जो बोला है वो अप्लाई करेंगे. कुछ चीजें अप्लाइड होती है. रूल्स in absence of partnership deed, आपका हेडिंग रहेगा रूल्स in absence of partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट रूल, any partner in the firm, any partner in the firm shall not be entitled for salary. मतलब अगर डीड में स्पेसिफाइड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी पे नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल shall not be provided. Interest on capital shall not be provided. Next, interest on drawings shall not be charged. Interest on drawings shall not be charged. Next, interest on partners loan interest on partners loan shall be provided at the rate of 6% per annum. Last, profits and losses shall be shared equally.